Hello students, welcome on my video. In previous lecture we discussed your topic is qualitative characteristics of accounting, and now we are going on your new topic accounting as a language of business. मतलब जो accounting है वो business की क्या है, language है. Understood? So let we start. Accounting is known as language of business. अब हमको पता है कि accounting हमारे business की language है, but why? So through language, either writing or speaking, any content is explained to one person to another persons. Means हम लोग language के through कोई भी content होता है उसको writing written form में, अदरवाइज speaking किसी को बोल के हम लोग एक person to second person में हम लोग क्या easily explain कर सकते हैं. सो अकाउंटिंग भी वही है कि हम लोग जो बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या फिर थ्रू अकाउंटिंग हम लोग क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस की हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं. सो थ्रू अकाउंटिंग. सो अकाउंटिंग थ्रू वी गेट ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस. अकाउंटिंग के थ्रू हम लोग सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय अकाउंटिंग बाय प्रोवाइडिंग रिजल्ट्स टू बी रिलेटेड parties. Means accounting में क्या है हमको पता है, we know all type of transaction and events are recorded in our accounting books. So accounting is a language of business. So language is used with its own predetermined norms. So accounting is also used with ओन प्री डिटरमाइंड नॉर्म्स. मतलब लैंग्वेज जो होती है लाइक गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, वो सब कैसे किसके बेस के ऊपर से बोली जाती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओन प्री डिटरमाइंड नॉर्म्स. सो अकाउंटिंग इज ऑल्सो यूज्ड विथ इट्स ओन प्री डिटरमाइंड नॉर्म्स बिकॉज अकाउंटिंग हैज also rules and principles, and these rules and principles are universally accepted, students. So accounts is work as a language of business. Means accounting है, account से वो कैसे work करता है, so as a language of business. Okay students, so let we see your new question. Is accounting a science or an art? Means accounting science है या फिर art है, वो हम लोग देखते हैं. सो लेट वी स्टार्ट. अकाउंटिंग इज अ साइंस. सो अकाउंटिंग इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, एंड दिस रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. अंडरस्टूड. साइंस क्या है कि ऑलवेज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. साइंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, सो साइंस के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर, और these rules and principles are also universally accepted. So in accounting also, accounting is depend on his own rules and principle, and these rules and principles are universally accepted. So accounting is a science because science is based on rules and principles, and accounting is also based on rules and principles, and both rules and principles are universally accepted. Okay, so in accounting, to record economic transactions of the business, they are classified on the basis of accounting in rules. So we know in accounting which type of transactions we recorded. So only economic transactions. तो हम लोग किसके बेस के ऊपर से वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो क्लासीफाइड करते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, बिकॉज in economic transaction we have already two types: cash transaction, cash or credit transaction, and internal and external transactions. So these transactions are classified on the basis of accounting rules. So when accounts are prepared by the different persons, the process of preparation of accounts and its results would remaining same. मीन्स अकाउंट्स जो होता है, जो कोई भी डिफरेंट पर्सन के पास से हम लोग प्रिपेयर करवा दे तो भी उसका रिजल्ट होता है वो क्या होता है, सेम. इट्स रिजल्ट्स वुड रिमेन द सेम बिकॉज all the persons are followed accounting rules and principles. So at the end of the accounting information we get results remaining same. Okay students, सो कोई भी पर्सन होता है वो क्या करता है, अकाउंट्स किसके बेस के ऊपर से प्रिपेयर करता है, सो अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के बेस के ऊपर से. सो सबके लास्ट में एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलता है, आंसर सबका सेम मिलता है. ओके स्टूडेंट्स, सो अकाउंटिंग इज साइंस. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके गुड. सो लेट वी सी. अकाउंटिंग इज अ आर्ट.
अब अकाउंटिंग आर्ट भी कैसे, साइंस तो हमने देख लिया पूरा ये 3 पॉइंट्स में, बट अब आर्ट भी कैसे. सो अपार्ट फ्रॉम साइंस अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ आर्ट. सो लेट वी सी. कीपिंग लिमिटेशंस ऑफ दिस अकाउंटिंग इन माइंड, a specific skills to prepare account in also required. मीन्स जो अकाउंटिंग की लिमिटेशंस है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख ली है आपके, तो वो लिमिटेशंस भी आपको माइंड में रखनी है, और उसके बाद आपको जो अपनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल स्किल होती है उसको यूज करके, यूटिलाइज करके आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करनी होती है. सो द प्रेजेंटेशन इन द डिफरेंट मैनर विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर एंड मीनिंग इज नोन एज art. Okay, it's known as an art. N. Okay, so अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जो है उसके ऊपर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स भी हमें फॉलो करने हैं, देन उसकी लिमिटेशंस भी माइंड में रखने हैं, और उसके बाद इंडिविजुअल स्किल का यूटिलाइज करके जो हम लोग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं, सो वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली आर्ट हो जाती है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. अकाउंटिंग इज अ साइंस or an art, and accounting is a language of our business. Okay students, so in next lecture we discuss terminology of accounting. accounting के जो words है accounts के related, वो words है जो हम लोग next lecture में discuss करने वाले. Okay students, I hope you all are understood. Thank you.